love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you. पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस हवर बोर्ड का जो वेट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा बीच में रखें,
क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता है, कई कई बार आगे की तरफ चला चला जाता है, कई कई बार पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, ये मोटर जो है वो 90 डिग्री पे रखें। यहाँ पर मैंने गलती की है, तो इसको मैंने कवर करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तैयार करने के लिए यहाँ पे 2 होल्स बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पैदा करते हैं। लेकिन सही और कुछ स्पीड बढ़ जाने के बाद ये काम नहीं करता, तो प्लीज़ ये मोटर जो है वो 90 डिग्री पे रखें। और एक बात आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमने पीछे मोटर लगाए है, जो इस हावर बोर्ड को आगे थ्रस्ट दे, तो ये प्लान हमारा फ्लॉप हो गया है, क्योंकि ये जो मोटर है बहुत कम पावर का है। और मेरी राय आपसे यही है कि इसको थोड़ा, इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तो ये काम करेगा, सही में काम करेगा। पीछे 2 बैटरी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका वेट बैलेंस करने के लिए लगाए हैं, तो इसके ऑपरेशन में कोई भी काम नहीं है। तो यही है जो कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।